ऑडियो ऑन करो, ऑडियो इज ऑफ। No, okay. Yes. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namah. Tasmai Shri Gurave Namah. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। तेरे चरणों में बीते ये जीवन, तेरे चरणों से हम दूर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों तो सब फूल खुशियों को बांटे हमेशा, अपना जीवन ही बन जाए मधुबन। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ ही जुल्म बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसी ये धरती थमी है। बोझ कृपा से तू ये उठा ले,
मन का विश्वास कमजोर होना। अति सुंदर भजन। इतनी शक्ति हमें देना दाता कि मन का विश्वास कभी कमजोर ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अगला भजन कुमारी लक्ष्मी लोचना, अर्थ भजन कुमारी लक्ष्मी लोचना पाड़वांगे। Yes, sir. Very good, ma, to see you. Please start. रेवती रागम रत्नांगी से ये आदिलवारू स्वरंगल औडवमेयम शाद शुद्ध ऋषभ शुद्ध मध्य मा पंचम कैसिकी निषादम गलै तरुवनवे सरि मा पनि सानि प मारि सावि आडंगम. Thank you. Very nice today. So small. Yes, sir. Okay, 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 okay. तो अब हम रिक्वेस्ट करेंगे कुमारी पूर्वजा. पूर्वजा Yes, sir. நல்லா இருக்கியா? வெரி குட் மா. வீடியோ ஆஃப் பண்ணாத. Okay, sir. பாக்குறதுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு. வெரி குட் மா. பாடுமா. மாடுமேக்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், மாடுமேக்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், காய்ச்சின பாலும் தரேன் கற்கண்ட சீனி தரேன், காய்ச்சின பாலும் தரேன் கற்கண்ட சீனி தரேன், கையில் நிறைய வெண்ணெய் தரேன் வெயிலிலே போக வேண்டாம், கையில் நிறைய வெண்ணெய் தரேன் வெயிலிலே போக வேண்டாம், மாடுமேக்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், மாடுமேக்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், மாடுமேக்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே, போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே, காய்ச்சின பாலும் வேண்டாம் கற்கண்ட சீனி வேண்டாம், காய்ச்சின பாலும் வேண்டாம் கற்கண்ட சீனி வேண்டாம், கையிலே உல்லாசமாய் மாடு மேத்து ஒரு நொடியில் திரும்பிடுவேன், உல்லாசமாய் மாடு மேத்து ஒரு நொடியில் திரும்பிடுவேன், மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், யமுனா நதிக்கரையில் எப்பொழுதும் கல்வர் பயம், யமுனா நதிக்கரையில் எப்பொழுதும் கல்வர் பயம், கல்வர் வந்து உன்னை அடித்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே, கல்வர் வந்து உன்னை அடித்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணி, மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், கல்வனுக்கும் கல்வனுண்டோ கண்டதுண்டோ சொல்லும் அம்மா, கல்வனுக்கும் கல்வனுண்டோ கண்டதுண்டோ சொல்லும் அம்மா, கல்வர் வந்து என்னை அடித்தால் கண்ட துண்டம் செய்திடுவேன், கல்வர் வந்து என்னை அடித்தால் கண்ட துண்டம் செய்திடுவேன், மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னேன், போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே, போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே, கோவாதனகிரியில் கோரமான மிருகங்கள் உண்டு, கோவாதனகிரியில் கோரமான மிருகங்கள் உண்டு, சிங்கம் புலி
கரடி வந்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே சிங்கப்புலி கரடி வந்தால் கலங்கிடுவாய் கண்மணியே மாடு மேய்க்கும் கண்ணு நீ போக வேண்டாம் சொன்னே மாடு மேய்க்கும் கண்ணு நீ போக வேண்டாம் சொன்னே போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே கோவர்தனகிரியில் கோவர்தனகிரியில் சிங்கம் புலி கரடி உண்டு கோவர்தனகிரியில் சிங்கம் புலி கரடி உண்டு கூட்டம் கூட்டமாக வந்தால் வேட்டையாடி வென்றிடுவேன் கூட்டம் கூட்டமாக வந்தால் வேட்டையாடி வென்றிடுவேன் போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே போக வேண்டும் தாயே தடை சொல்லாதே நீயே மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னே மாடு மேய்க்கும் கண்ணே நீ போக வேண்டாம் சொன்னே பச்சமுள்ள நந்தகோபால் பாலனெங்க எங்கு கேட்டார் பச்சமுள்ள நந்தகோபால் பாலனெங்க எங்கு கேட்டார் என்ன பதில் சொல்வேனடா என்னடா பதில் சொல்வேன் ஏக்கமுடன் திரும்பிடுவார் என்ன பதில் சொல்வேனடா ஏக்கமுடன் திரும்பிடுவார் பச்சமுள்ள நந்தகோபால் பாலனெங்க எங்கு கேட்டார் 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 என்ன பதில் சொல்வேனடா என்னடா பதில் சொல்வேன் ஏக்கமுடன் தேடிடுவார் ஏக்கமுடன் தேடிடுவார் பச்சமுள்ள நந்தகோபால் பாலனெங்க எங்கு கேட்டார் பச்சமுள்ள நந்தகோபால் பாலனெங்க எங்கு கேட்டார் பச்சமுள்ள நந்தகோபால் பாலனெங்க எங்கு கேட்டார் சார் அவ்வளவுதான் சார் தெரியும் நோ ப்ராப்ளம். அவ்வளவு ஞாபகம் வச்சிருக்கியாமா? பார்த்து படிச்சியா இல்ல நீயே பாடினியா? நானே பாடினேன் சார். ஓ, அவ்வளவு ஞாபகம் வச்சிருக்க. வெரி குட், வெரி குட், वेरी गुड. थैंक यू सर. वेरी गुड सर. अगला हमारे हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारी बहन आशा मेहरा जी को कि वो भी अपना भजन प्रस्तुत करें. Yes बहन जी. ऑडियो ऑफ है, ऑडियो ऑफ ऑन कीजिए. Yes, yes. Okay. Shivratri is around the corner, and I thought, why should I not sing on Shiva? Very good. It's the marriage anniversary of Lord Shiva and Parvati. Right. Today, we should not ask for anything. आज उनका गुणगान करें. Let us praise him. शिव योगी मतवाला, मेरा शिव योगी मतवाला, शिव योगी मतवाला, मेरा शिव योगी मतवाला, पहने सांप की माला, मेरा शिव योगी मतवाले, शिव योगी मतवाला, मेरा शिव योगी मतवाला, आंख से निकले ज्वाला, मेरा शिव योगी मतवाला, शिव योगी मतवाला, मेरा शिव योगी मतवाला, पिए जहर का ज्वाला, मेरा शिव योगी मतवाला, पिए जहर का प्याला, मेरा शिव योगी मतवाला. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय नमः. गुंज सदा जयकार हो बोले तेरे भवन में, गुंज सदा जयकार हो बोले तेरे भवन में. बेलपत्र और गंगा जल ले, बेलपत्र और गंगा जल ले, भक्ति भाव से
पूजा कर ले भक्ति भाव से, पूजा कर ले तारेंगे भव से पार, आओ चलो शिव की शरण में, तारेंगे भव से पार, आओ चलो शिव की शरण में। गुंजे सदा जयकार हो, बोले तेरे भवन में, शिव का ध्यान करे मन निर्मल, शिव का ध्यान करे मन निर्मल, शिव भक्ति है पुण्यों का फल, शिव भक्ति है पुण्यों का फल, करते हैं बोले निवास ओ अपने भक्तों के मन में, करते हैं बोले निवास ओ अपने भक्तों के मन में। गूंजे सदा जयकार हो, बोले तेरे भवन में, गूंजे सदा कार हो, बोले तेरे भवन में। संकट से शिव सदा उबारे, संकट से शिव सदा उबारे, दर्शन देकर भाग्य संवारे, दर्शन देकर भाग्य संवारे, बोले की महिमा अपार, आओ समुदाय सब मिलके, बोले की महिमा अपार, आओ हम गाएं सब मिलके। मुझे सदा जयकार हो, बोले तेरे भवन में, मुझे सदा कार हो, बोले तेरे भवन में, मुझे सदा कार हो, बोले तेरे भवन में। अति सुंदर, महादेव की महिमा सुन के बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट हमारा भजन, बता जी आप प्रस्तुत कर रहे हो भजन अपना? हाँ, अगर कोई नहीं बोलने वाला है तो अगर बोल लें तो अच्छी बात है, मेरे को कोई ठीक है, ठीक है। तो मैंने काफी हफ्ते मैंने कि मैं गा लेता हूँ अपना भजन। ओके, धन्यवाद। सबको नमस्कार। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के देरे, तूने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम ना तेरा गाया, नैन मूंद कर हे परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया, मन वीणा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर
ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे इन पैरों से चल कर तेरा मंदिर कभी न आया, जहाँ जहाँ पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया। हे हरिहर में हार के आया, अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, ऐली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब हमारा अगला भजन हमारी माता जी प्रस्तुत करेंगे। लक्ष्मी लोचना का हो गया। हाँ, लक्ष्मी लोचना का हो गया आज। विशाल, you want to sing anything, विशाल? ओके, राइट, आप प्रस्तुत कीजिए। ये भजन में बताया कि हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत ही हमारे अच्छे कर्म होते हैं तो हमको मिलता है। कोई तो अच्छे कर्म करके इसको तार जाता है, मतलब इस मनुष्य जन्म में ही हम अच्छे कर्म कर सकते हैं और किसी योनि में नहीं। तो उसमें हमने क्या करना है इसको बताया। किस्मत से मिला ये मानव तन, कोई डूब गया कोई तार गया। किस्मत से मिला था मानव तन, कोई डूब गया कोई तार गया। कोई कर्मा वाला खट चलया, कोई अगली कमाई उजाड़ गया। कोई कर्मा वाला खट चलया, कोई अगली कमाई उजाड़ गया। पशु पक्षी कीटाणु बन बन कर ये मानव चोला पाया था। पशु पक्षी कीटाणु बन बन कर ये मानव चोला पाया था। विषयों में फंस मति मंद हुए, न विवेक रहा न विचार रहा। किस्मत से मिला था मानव तन, कोई डूब गया कोई तार गया। ये मानव जन्म अमोलक है, कोई विरला लाभ उठाता है। ये मानव जन्म अमोलक है, कोई विरला लाभ उठाता है। जिसने इंद्रियों का दमन किया, वह भव सागर से पार हुआ। किस्मत से मिला ये मानव तन, कोई जीत गया कोई हार गया। सत विद्या का प्रकाश हुआ, जिस प्राणी के मन मंदिर में।
सतविद्या का प्रकाश हुआ जिस प्राणी के मन मंदिर में, सब उसकी दुई दूर हुई, उस भगवन का दीदार हुआ। किस्मत से मिला ये मानव तन, कोई डूब गया कोई तार गया, कोई कर्मा वाला खट चलया, कोई अगली कमाई उजाड़ गया, कोई कर्मा वाला खट चलया, कोई अगली कमाई उजाड़ गया। किस्मत से मिला था मानव तन। सुंदर भजन माता जी। हाँ जी, धन्यवाद जी। आज सब लोगों ने बड़े अच्छे भजन प्रस्तुत किए। तो सभी भजन बोलने में एक्सपर्ट हो गए हमारे ग्रुप में। क्या क्या कि आज के भी एक स्कूल के बच्चे ज्वाइन करने वाले थे, तो ठीक है, उनको क्या प्रॉब्लम है और बाद में ले देखेंगे। तो अब हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। विशाल, वैभव, why don't you switch on your mic? Are you there? Yes, sir. We are there. Yeah. Open your mic. No, open your video. No. Oh, 1 minute, sir. Okay. Let us see your faces. Yes. Yes, Mataji is going to start a pravachan and you ask her a question. Last time किसने प्रश्न पूछा था? Who had asked question last time? Vishal ne, Vishal. अच्छा. Yes, sir. Please, what question last time you put? Open your video and ask Mataji once again, please. I have remembered that question. Okay. I told that time that Ravan didn't believe in God. Then he asked, he believed God because he used to worship Lord Shiva. Then in short, I answered that actually we have we should know that what is the worship of God. Believe in God is how can we know that one believes in God or not? Many people are there in our country and in this world also. We say that God is there, we believe in God, we worship him, only jumping and chanting his name, we think that we are believing him. Actually, this is not the faith in God. The actual situation should be, when we believe in God, it should be that whatever happens in our life, whatever happens in our life, we should satisfy with it, and we should try for better in our life. We should try in right way to acquire good things, better things, more in our life. But we should not blame any people or any person or any God. He is not doing justice with me or like this. And if we believe in God, we will do justice and we will do always good deeds in our life. If we do cruelty in our life and we want to conquer other peoples and we want to have to snatch his right in our life, that is not the belief in God. That is, we want to empower myself on those people. Ravan was, he used to worship Shiv
but only to acquire the powers from him. He wanted to have kingdom in all over the world. He always believed in the wars and quarrels in the universe. That's why he was interrupting these rishis in when they were doing good things like yajna and puja and devotion to God. Then he interrupted and he started to send many demons there, rakshasas there, asuras there, and they were interrupting them. They were putting this blood and flesh in the yajnas, so that their yajna should not be complete. Their hotra yag should not be completed. They should this should be interrupted, and when yajna is not completed, then the rishi would not get its result, full complete result. They could not get their complete result. That's why he was always in this he was always doing these bad things and interrupting all rishis and good things. And that's why when Rishi Vishwamitra was doing yajnas in the jungle, in the forest, he sent many rakshasas there. There were Marichi and Subahu, two rakshasas. They were interrupting and putting all these bad things in the yajna, so that yajna should be dhvansed. It should not be completed. Okay, Vishal? His worship was, his puja to Shiva was only, you haven't heard that he was only whenever he was doing his worship, he was asking for some power only. Please get me this power so I can defeat another king or defeat another kingdom, and may I have that kingdom in my under. I should get that kingdom. Okay. His worship was not real worship. That was only for his selfishness, only for getting power shaktis from that God only. That Devata, not the proper God, Bhagwan. We tell the God. Actually, God is who has created this whole universe, who has given birth to Rama, all demons are devatas, deities also. The God, actual God is who has created this whole universe, this Surya, Chandrama, Prithvi, seas, oceans, all this. Others have only some powers, and that are not the supreme God. They are only God devatas, not Bhagwan Ishwar. And he was worshipping that gods, devatas, to get the powers and strength from them, not the actual God who is the Nyayakari, who is Sarvayapak, omnipresent, who is the omniscient God, who knows our all things, who is the judge to give the result of our karmas. Whatever we do, the God knows our every action, and he in the result he gives the fruit of those karmas, and after that he gives the birth of every people. We got the birth in this manushya, in this human body. That is the good works, good deeds. It is the result of our good deeds. Otherwise, the pashu, pakshi, animals and birds and other insects all takes birth, all have same soul, similar soul. Whatever soul we have, we are soul,
and every creature had the same soul, but their bodies, their this vahan, this vehicle is different because of their karmas only. That the fruit of that karmas we get through that God, the supreme power, who has created whole this world, not the gods, the devatas. Okay, is it clear, Yes, yes. Vishal? Hello, can you hear me? Lakshmi Lochana, you want to ask something? No. You understood? नहीं मेरे को एक डाउट Hello. है. हाँ जी, हाँ जी. आप बोलते हो रावण ने लिया था वरदान महादेव से. ओके, ही इज अ देवता. तो यू मीन टू से लॉर्ड शिवा इज नॉट द रियल गॉड? क्योंकि आप मेरे को आप बोले थे द पर्सन हु क्रिएटेड द यूनिवर्स. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रियल गॉड एंड शिवा? हाँ जी. Actually, there are many sects in our Hindu Vedic culture. In the beginning, only the Vedic culture was there. Then from Vedas, only Vedas considered only one God. One God is one. You know? Yeah. How many gods are there? Only one God. And the Shiv, Brahma, Vishnu, Mahesh, there are different names of the God because of its qualities, because of his work. As he creates this universe, then he is called Brahma. The work of creating this world is it is named as Brahma. And who maintains, sustains whole this world is called Brahma. Vishnu, who is Vyapak, that is the one entity. That is the entity is the one, but his qualities are different, and with different qualities, these qualities he is called by different names. As a person, as you, as I take an example of Lakshmi Lochana, her name is Lakshmi Lochana. The main name is, utmost name is Lakshmi Lochana, and she is called as a daughter, she is called as a sister, she is called as a student, as a different names. Like this lady is called mother, chachi, tai, kaki, different names, teacher and officer. As by his qualities, he is known as with different names. Someone calls her as a boss, someone madam, someone as a different, but she is the one, but his designation is different because of his qualities and his works. So the God is the one who creates. Only one God can create this world. Shiv is the Shakti. Shiv, actually the meaning of Shiv is the who does the welfare of whole universe. The welfare of whole Shiv means Mangalkari, Kalyankari, who does the welfare and good of every person. And that Shiv, actually, whatever we think that we have made an idol of Shiva, like a serp in his neck, Ganga on his. This is only the symbol of that. The Shiv, one was the very, very intelligent engineer at the old time. It was the engineer who dug the who make the many paths for bringing Ganga from the Gangotri, from these caves and from the on the mountains. He make many paths, and he make able the Ganga from Gangotri to this plain, this plains or in our earth also. That was another engineer and very intelligent. That was not a god
or supreme God who created this universe. Otherwise, we think, is it possible to bear Ganga on the head? No. It is not possible. It is only the symbolical explanations of our gods, and we have made ideals of these things. The actual God is who had created this universe is Nirakar. He is formless. He could not have any form, because who has formed the body, he is to create the body, another God should be there. To create the another God should be there, because before God, no can create our body, no can create this universe. After creating this universe, after the existence of this universe, every person can take birth on the earth. Before this universe, before earth, before sun, before Chandra, moon, and before air and water, no one can take a birth. It is not possible. It is against the nature. So the Paramatma, who is the supreme power, he is only one. He has created this whole universe. Not these are the some we can say the kathanak, kimvadantis in this word, which are told to explain the qualities of God in different ways. So the same one person, one entity is there who has created this world, who is sustaining this world, and who will destroy this world after, when there will be the time of pralay in this universe. The Shiv is the only the, I don't know who was that Shakti. At that time, many symbolical things were made in this world, and now there are these are only the symbol. I think at that time there may be many, as today there is America, Rus, and all these things. We take weapons from these countries. There may be many gods or powerful persons who has many shaktis, many powers and strength and weapons they had, and the people worship them and take those powers from them. I think so. So Mataji, एक बात से ये आता है, you have given a very scientific explanation about Lord Shiva, that it is not possible for anybody to carry Ganga on the head. Probably you're equating him to a person who's very powerful, who brought down Gangotri se wo leke aaye Ganga pe. Yes. So fine. So this is another scientific school of thought also. So सबको समझ में आया? Everybody understood what Mataji said, or you want me to summarize it in Tamil or in English once again? Vishal? Anybody else? Tell me. Yeah, you got your answer for what you're asking? Yeah, yes, sir. Yeah, and you understood the scientific explanation she gave to Lord Shiva, that holding Ganga on the head is not possible, but he created the route, like how the engineers today create dams, you know, right? And Yes. that was the creator who was given the function to do good. You understood? So the God gave him the power, so that's the reason he brought in Ganga onto this earth from Gangotri downwards, right? Okay. It's only a scientific explanation to what is possible, because we people in Hinduism a lot of fantasies which are not properly explained. That is the reason at times other people tend to make fun of us. Not that they are scientific, they are more unscientific. Only thing, we have not been taught scientifically like how Mataji has made us understand about Lord Shiva. Because Hinduism is not a way of life, not a religion, it is a science. Okay?
Actually, our science was well developed at that ancient time, no? Yes. So, anybody else want to share any thought? और किसी को कुछ बोलने का है? हम बंद करें प्रवचन, ये बड़ा कार्यक्रम. Anybody else? ठीक है. Silence का मतलब आप मौनम स्वीकृति लक्षणम, बस ठीक है. ठीक है. ओके माता जी. तो आज थोड़े रामायण के अलग थोड़े लॉर्ड भगवान शिव पे आशा मेहरा जी बहन जी ने भी लॉर्ड भगवान शिव पे गाया, तो एक अलग दिशा मिल गई. तो आपने भी इन पे प्रवचन करके हम हमारे को साइंटिफिक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया, अनदर स्कूल ऑफ थॉट. सो माता जी को और आप सबको धन्यवाद. धन्यवाद. अगले फ्राइडे को शाम को 7 बजे फिर मिलेंगे. धन्यवाद. धन्यवाद. जय हिंद.